ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕਮਾਈ। ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜਿਉ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਇ ਰੈਨ ਨ ਆਵੈ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ। ਮੋਇ ਰੈਨ ਨ ਆਵੈ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਉ। ਹੂੰ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਉ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਉ। ਹੋ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕਮਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਉ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾਂ ਮਿਲਨ ਕੀ ਪਿਆਰੇ। ਹੋ ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਜੇ ਸੋ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈਐ ਬਾਲਕ। ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਖੀਰੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾਂ ਮਿਲਨ ਕੀ ਪਿਆਰੇ। ਹੋ ਕਿਉ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਜੇ ਸੋ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈਐ ਬਾਲਕ। ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਖੀਰੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ। ਜੇ ਸਿਉ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਨੀਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕਾ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਮੇਲੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੇਦਨ ਜਾਣੈ। ਨਿਤ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਹੋ ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਉ ਚਾਤਰਕ ਜਲ ਕੋ ਬਿਲਾਤਾ। ਹੋ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਲੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਰਖ ਲੇਤਾ। ਹੋ ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਉ ਚਾਤਰਕ ਜਲ ਕੋ ਬਿਲਾਤਾ। ਹੋ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਲੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਰਖ ਲੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ
ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग 564 ते सुभायमान है। राग वडहंस जो कि एक शांत सुभाव पैदा करता है। वडहंस महला पंजवां घर दूजा, जिथे शब्द नूं वडहंस राग विच गायन की हिदायत सतगुरुआं ने बख्शी है, उत्थे जोड़ी या तबला उन्होंने दूजे घर दे विच वजाउणा, ताकि शब्द के भाव हिरदे नूं विंध सकन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख वाहिगुरू एक है, शब्द रूप है, ओंकार रूप है। सारी सृष्टि दे विच उस शब्द राही जन्म ते मरण हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रहा ते पालना हो रही है। अकाल पुरख वाहिगुरू एक सच्चे ज्ञान का खजाना है, सतगुर है ते प्रसाद आनंद का घर है। सतगुरु महाराज सानू अज एक सेध बख्शते हैं भी बाणी पढ़दे सेवा करदे एक मन की वो अवस्था बननी चाहिए है जिथे अंदर प्यास उठे। जे हाले भी असी गुरुद्वारे आके माया दी गल्लां करते हैं, हाले भी असी दुनियावी गल्लां करते हैं, तो हाले असी मंजिल ते पहुंचे नहीं। महाराज फरमाते हैं कि जेड़े गुरमुख प्यारे दे हिरदे विच दर्शन की प्यास है, मैं अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हाँ। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, जेड़े जन नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरू के दर्शनों की प्यास है, नानक तां कह बल बल जस, मैं बलिहार जाना। सतगुरां दे हिरदे विच वो तड़प उठी है जो साडे नाल सांझी करदे ने। पर उपदेश है भाई दुनिया के रसां नूं छड्ड के उठो उपर, हिरदे विच वो प्यास उठे। किस तरह की प्यास? मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे। लोच हुंदी है एक बहुत स्ट्रोंग विल, जिन्हों असीं कहने एक तड़प। मैनू अपने प्यारे दे मिलन दी एक बहुत तड़प उठी है हिरदे विच। हो क्यों पाई गुरपूरे, मेरे पूरे गुरु, किस तरह मैं वो दर्शनां दी तड़प नूं पूरी कर सकदा, किस तरह मैं वाहिगुरू दे दर्शन कर सकदा। दुनिया के जिहड़े तमाशे ने, दुनिया की जिहड़ी कार विकार है, कार विहार है, वो इस तरह जिस तरह छोटे बच्चे नूं खिडौने दिते होंदे हैं। छोटा बच्चा खिडौणियां दे नाल खेडी जांदा, पर माए कहंदे ने एक दिन या एक समय वो फिर चीका मारदा, मैनू भुख लगी, मैनू दुध दिओ। इसे तरह महाराज कहते कि दुनिया के लोग माया दे विच खुबे होए आ, जिस तरह एक नियाणा खिडौणियां नाल खेडी जांदा, पर बाणी पढ़दियां पढ़दियां, सेवा करदियां करदियां एक दिन वो याद आएगी अपने प्रीतम प्यारे दी। जे सो खेल खिलाइए बालक, रह ना सकै बिन खीरे। खीरे भाव दुध, बच्चा दुध तो बगैर रह नहीं सकता, ना ही उसकी भुख उतरती है। इसे तरह उस वाहिगुरू के दर्शनों तो बगैर साड़ी माया की भुख नहीं उतर सकती। मेरे अंतर भुख उतरे ना उतरे अमाली, जैसो भोजन मैं नीरे अमाली। मेरी सहेली जो अमला नाल भरपूर है। हुण जदों दो गुरमुख प्यारे आपस च गल्लां करदे आ, वो काहदियां गल्लां करदे? गुरुद्वारे दे विच जदों असीं आउंदे आ, थल्ले लंगर हॉल जाने आ, ते गल्लां की हुंदियां साडीआं?
सोचने वाली गल भाई अज की होया कमेटी दे विच किन्ने जंग होए इन्ने प्रधान ने सैकटरी नूं की किया अज कमेटी बनी कि नहीं बनी कई तरह के सवाल सारे मायक दुनियावी पर गुरु महाराज प्रेरणा बख्शते आ भी तुसी गुरुद्वारे आया एक दूजे नूं पुछो भाई रब नूं किद्दां मिलना कदी सवाल पूछया किसी ने मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली मेरी सहेली है तू गुना नाल भरपूर है वाहिगुरू नूं मिलन दी भुख मेरी उतरी नहीं हाले वाहिगुरू नहीं मिलिया जे सो भोजन मैं नीरे दुनियावी पदार्थ मैं बहुत प्राप्त किए ने तरह तरह के भोजन खाधे हैं पर हुण जिहड़े दुनियावी सुख ने वह भी चंगे नहीं लगते मेरे मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन धीरे मेरे हिरदे विच अपने प्रीतम का प्यार छाला मारदा उछाले मारदा मेरा मन धीरज दे विच किस तरह आ सकता बिना देखे हुए सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेलो मित्र सुखदाता मेरे सज्जनों मेरे मित्रों मैनू कोई सलाह दो किस तरह मैं सुखदाते अपने मित्र नू मिला ओ जी की मेरी सब बेदन जाने नित सुनावे हर कियां बातां मैनू लोकां दीयां गल्लां ना सुनाओ मैनू वाहिगुरू दीयां गल्लां सुनाओ भाई वाहिगुरू नाल किद्दां मेल होना हो एक खिन तिस बिन रह न सका जो चातरक जल को बिल लाता साध संगत जी एक पंछी हुंदा चातरक बड़ी खूबी है जिस तरह एक कुत्ते दे विच बहुत खूबी है भी अपने मालक नूं छड्ड के किते नहीं जाता सानू कुत्ते तो सेध लैनी चाहिए आ भाई एक कुत्ता मालक की इन्नी सेवा करता इन्नी रखिया करता उस तरह सानू अपने मालक नूं चेते च रखना चाहिए मालक की सेवा करनी चाहिए है कबीर साहब ने तो इन्ना भी कहता हम कुकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार मैं तेरे दरबार का कुत्ता सो गुरु महाराज कृपा करते हैं चातरक पंछी सिर्फ आकाश तो गिरी हुई बूंद नूं पींदा धरती का पानी नहीं पींदा साध संगत जी छप्पड़ तो पानी नहीं पिएगा अपनी चुंझ नूं उपर चुक के जदों मीह वरसदा ते ओह जिहड़ा मीह जिहड़ा बदला का पानी है स्वच्छ पानी है उहनूं पींदा जिस तरह महाराज एक एग्जाम्पल देंदे आ उदाहरण देंदे आ जिस तरह चातरक तड़प उठता है भई अज बदल जड़े आ उन्होंने तो बरखा नहीं हुई मेरी प्यास नहीं बुझी ऐसे तरह मेरा मन तड़प उठा क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता मेरे वाहिगुरू मैं निर्गुण हाँ तां ही तेरे दर्शन नहीं होए किसी को पूछ के देखो या किसी को कह के देखो भाई तू निर्गुण आ उत्थे तुहाडा पवाड़ा शुरू हो जाना महाराज कहते मैं निर्गुण हाँ मैनू कहो मेरे को कोई गुण नहीं ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया साध संगत जी एक स्टेटमेंट देने वास्ते हिम्मत चाहिए गट्स चाहिए ने साडे कोल गट्स नहीं है असीं नहीं कह सकते भी मैं मूर्ख हाँ मैं मुग्ध हाँ पर गुरु महाराज ने सानू बार बार गुरबाणी दे विच प्यार नाल समझाया भाई जब तक अपने आप नू मूर्ख नहीं समझते तब तक समझ भी नहीं आनी वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं होनी सो गुरु महाराज कृपा करन फिर गुरु महाराज
ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਲਾਲ ਰਾਵਿਆ ਪਿਆਰਾ, ਤਿਨ ਆਗੇ ਹਮ ਆਦੇਸ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਭੋਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵਈ, ਕਰ ਨਾ ਸਕੋ ਹੋ ਵੇਸ਼ਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੇਸ਼, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਭਾਵ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਕ ਪਿਲਾਤਾ ਪਈ ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਈ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਕ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਮਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਅਮਾਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਲੱਗ ਪੈਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਚ, ਉਹ ਤੜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੜਪ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਫਲ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ,
सेवक सिख सबे करतार। हे मेरे वाहिगुरु, सारा परिवार सेवक सिख सारे सुखी रहन। किस तरह सुखी रहन? हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपार। सारे परिवार का ध्यान तुहाडे चरना कमलों दे विच रहे, यह मेरी अरदास है। तुम्हें छाड़ कोई और ना ध्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। जो मैनू चाहिए वह तुहाडे कोलों प्राप्त हो जाता, मैनू किसी की लोड़ नहीं है। यह अरदास करिए। सो गुरु महाराज कृपा करन। कुछ समा अंग्रेजी के विचार करना है। Today's हुक्मनामा is a blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib in Rag Vadhans. Rag Vadhans provides the quiet and tender mood where Guru Maharaj has instructed to recite the Shabad in Rag Vadhans. The Jodi has to be done in Kar Duja so that we can reap the maximum benefit of the essence of the Shabad. Guru Maharaj begins the Hukamnama with Mangalacharan, Ik Onkar Satguru Prasad. There is only one God, Onkar. Within the word Onkar, hidden are ways of creating, sustaining, and destruction. So Vaheguru is the overall director, and there is only one who creates, sustains, and destroys and recreates. That is a cycle. Satgur is the source of true wisdom. Prasad, the source of bliss. There was a question asked in one of the camps that there were a lot of Nojwans. What is the end effect of reading Gurbani or taking Amrit? What is the end result? What do you achieve? The answer is very simple. The purpose of being blessed by Khande Bate ki Pohol, the Amrit, reading Gurbani, coming to the Gurdwara, is to develop craving to meet Vaheguru. That's the only objective. If by coming to the Gurdwara for 30 years, 40 years, you are still involved in the politics, you are still talking about other people, there is no desire to meet Akal Purakh Vaheguru, so far you haven't met your objective. You still need to work towards creating that feeling. But that is blessing. Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj in today's Hukamnama shares his feeling. An idea is that if we can have that feeling within us, then there is a chance that we are going to become one with Vaheguru. मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे हूँ क्यों पाई गुरपूरे. Locha. Locha means craving, desire. I have a deep desire to meet my pyara, my beloved Creator. How I can meet Him, my perfect Guru? Tell me that. I'm seeking advice. जैसो खेल खिलाइए बालक रह न सके बिन खीरे. Guru Maharaj gives an example of a little child, Balak. Khel khilaiye is busy in playing with the toys, like we are busy in playing with our toys, our cars, Xboxes, PlayStations, Facebook. People spend hours and hours on the computer.
talking to their friends. It has become means of entertainment nowadays. But Guru Maharaj reveals there is no peace in that. Like a child who plays with the toys for long, long hours and then feels hungry, needs milk. Reh na sakay bin kheere. Kheere means kheer. Kheer is milk. Cannot live without milk. How long child can play with the toys without the milk? Not very long. It's just an example, analogy Guru Maharaj has given to us. How long we can keep enjoying the materialistic tastes? One day, to attain the peace, to have the peace, the contentment, we need to have that pyas, that thirst to meet Vaheguru. मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जैसों भोजन मैं नीरे. Now Guru Maharaj talks about the food. I've known people, I used to enjoy going to the different restaurants, try different types of food. You go to Jimmy's, you have different type of pizza, you have different types of continental food there, and people try different foods. At the end of the day, you feel so bloated. I've stopped going to such places where there's a buffet. You eat so much. But Guru Maharaj is talking about the delicacies, the food, clothing, different types of entertainments in this world. Guru Maharaj is saying, I don't need them anymore. Even though there are 100 types of food, मैं जैसो भोजन मैं नीरे, मेरे अंतर भुख ना उतरे. अमाली जैसो भोजन मैं नीरे. The bhukh, the hunger to meet Vaheguru is not going now. No matter how many types of delicacies you give me. Nire means to cook, to prepare. No matter you prepare 100 types of different foods, since I'm thirsty, hungry to meet Vaheguru, even these all sorts of foods, they are tasteless. So that is the stage you reach, reading Gurbani, doing seva. But on the contrary, what happens? People fall in politics. I've seen on the camps, I've seen on the, seva missions, there's so much politics, there's no talk about how we can meet Vaheguru. Does that sound true? Guru Maharaj reveals, I want my friends who can tell me about Vaheguru. Sun sajjan, mere pritam bhai, main melo mitra sukh data. Oh my friends, stop talking about other people. Stop talking about the material. Stop talking about cars. Help me to meet my true friend, who is bestower of peace, Sukh Data. O ji ki meri sab bedan jana hai, nit sunave har kiyan batan. I need those friends who can tell me stories of Vaheguru. Har kiyan batan. Batan means talks. Talk about Vaheguru. Don't waste your time. Ho ek khin tis bin reh na sakan, jo chatrak jal ko bil lata. Now Guru Maharaj has given another example of chatrak. There is a bird called chatrak, rain bird. Chatrak will never drink water from the ground. Always looking for pure water. So how does it drink? Chatrak always waits for raindrop. When there is rain, Chatrak lifts its beak up towards the sky and drinks the rain water, which is clean.
Similarly, Guru Maharaj has used that example for us. Rather than drinking the dirty water of the Maya, we should look for the beautiful Amrit from the Dasam Dwar. There is a Shabad in Bani, Baras Megh ji til bilam na lavo. Vaheguru, shower the Amrit. I want the rain of Amrit from my Dasam Dwar so I can enjoy your presence. Baras Megh ji, Megh means cloud, referring to Vaheguru. Til bilam na lavo. Bilam means delay. Till means even little bit. Don't even delay it. So this is another beautiful example. हूँ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता. Vaheguru, I'm nirgun, without any virtue. You dare telling someone that you are stupid. You are going to pick up a fight, argument. You can't even tell people, but Guru Maharaj is making this claim that I'm nirgun, na ho jati sati nahi padya murukh mugda janam pya. I'm dumb. I'm born as a fool. But we don't have that feeling. Until we have that sort of feeling that we are the lowest of low, we are the most inferior, there is no chance to meet Vaheguru. मैं निर्गुण को रख लेता. Vaheguru, you have so many virtues, I'm virtueless. Help me. This question was asked by someone, that I do so much Simran, but still I don't enjoy it. But the answer is, you are looking for enjoyment. Leave it to Vaheguru. You do good acts. Be compassionate. Be nice to other people. Be tolerant. Be truthful. Don't bicker. Don't slander. And you will get into a state of mind where the Simran will have effect on you. Satsangaji, if you have waterproof covering on top of you, and you might complain, I don't enjoy the rain. It is so hot, I want to enjoy the rain. You won't enjoy the rain because you have the waterproof clothing on top. Take it off, then you can enjoy the nice and cool drizzle. Similarly, Satsangaji, when we give up all our demerits, we start enjoying Simran, Gurbani, Satsangat. So, with these vichar, I pray, and you pray for me, I pray for you, that we can have that craving, that desire to meet Vaheguru. Jinko lagi pyas, amrit se khaye. Those who have thirst to meet Vaheguru, they only will meet Vaheguru. They will only receive amrit. May Vaheguru bless us all. Keep in Chaddi Kala, have a great day. Keep smiling. Don't forget to make others smile as well. Okay? Very important. आप जपो अवरै नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ. भुला चुका दी माफी. कीप इन चढ़दी कला. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.